बहुत ज़्यादा enjoy करना होगा आप लोगों को. And I know what you guys are thinking. कि जी event का नाम है Curly Head Conversations. नहीं इसके बाद तो कर ही नहीं है. Slow motion opening. Wait. ठीक है ना? झूठ नहीं बोला मैं अभी तक झूठ नहीं बोला किसी ने. ठीक है जी. So assalamualaikum everybody. My name is Akbar Chaudhry and I am a comedian. If that was not already evident. And today I will be interviewing a very dear friend of mine. So we'll have a funny talk show interview kind of thing. ठीक है everybody? That's what everybody is expecting, right? कोई ये तो नहीं सोच रहा है कि one day cricket शुरू हो जाएगी यहाँ. इस तरह का तो नहीं है. सब ठीक है. Everybody is on board. Unfortunately, I am not famous enough to be interviewed myself. So ये कुछ सरकारी तारा भी नहीं है कि पर्ची लग जाए. So I have to resort to interviewing famous people in the hopes कि एक दिन मेरा भी नंबर आएगा. लेकिन that just seems increasingly unlikely. Like expecting a reply to a message that has been seen 4 days ago. Why won't you reply, Haruna? Our babies would be beautiful and funny. Long curly hair and white skin. क्योंकि I'm not Korean. So, combination so rare that if they were Pokemon, thousands would be lining up outside our house. Yes, we have a house. If only you'd reply. We could have everything. Instead, you screenshot and post on Soul Sisters. But the only time I have been interviewed is while applying for a job. I used to work as a mechanical engineer and I interviewed at places like Engro, PSO, PNG, Subarco, Packages Limited, and for some reason International Steels Limited. Why do they call it that? International Steels Limited. It's in Landi. There's nothing international about Landi. If you take something international to Landi, someone will steal it. But I got rejected by all of these places, except Lotte Chemicals. The only thing I did different was get a haircut. And I suspect that might have something to do with it. This was back in 2012, August 2012. Haven't gotten a haircut since. But 4 years, my hair has been intact for 4 years. My hair has seen over 15 iOS updates. My hair has experienced the transition from Mathura to Gandhir Balo. My hair has been around longer than the presidency of Mahmoud Hussain. And I'm convinced more people have seen my hair in person than they have our president. But I ended up taking the job at Lotte. In retrospect, that was a bad decision. Not because it's a bad place, but you know, जब भी कोई पूछता था, हाँ भाई कहाँ काम करते हो? लोटे? ओ लोटा, हाँ. ये क्या कॉमेडी है यार? क्या ये कहते हैं अच्छा कहाँ काम करते हो? दराज में, हाँ. दराज में बैठ के काम करते हो. या फिर where do you work? Jerry's, oh Tom and Jerry's, हाँ. Oh, you work at Siemens. आप में से कोई ऐसा anybody worked in HR, does work in HR? आप क्या कर रहे हो? Oh, you do. Exactly. You should not have admitted that. Because even if you just before coming to the show donated ₹1 crore to Sailani, we still hate you. And इस तरह करते हैं सवाल कि जी where do you see yourself in 5 years? No, I live in Karachi. Hopefully alive at that. Or what is your greatness? What is your greatest weakness? और जब बाथरूम में छिपकली नजर आ जाती है. What I really hate is tell us about yourself. So I just now say I'm like NM Newton. So anyway, I
I just don't think interviews are for me. But this interview is for Ali Gul Pir, and tonight we shall be having a very interesting conversation with him. And I hope you guys enjoy it. इस तरह की चीज मैंने पहले नहीं की है, तो अगर ना अच्छी लगे तो दूसरों को मत बताइएगा, और अच्छी लगे तो जोर जोर से ताली हो जाएगा. तो प्लीज आप लोग की भरपूर तालियों में प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर Ali Gul Pir. Okay, so let's just commence the drilling. मैं थोड़ा ऑफिस में जैसे बैठते हो, आपका एक्सपीरियंस क्या है? Okay, so सवाल बहुत सारे तो मैं याद नहीं कर सकता हूँ, मैंने iPad रखा है. पेपर पे भी लिख सकता था, लेकिन iPad ज़्यादा अच्छा लगता है. ये थोड़ा कैसे वाले कैसे. ठीक है. So Ali Gul, your Wikipedia page says that Ali Gul is a rapper, comedian, television and voice actor. So what do you really do? What is your real job? What do you mean? This is what I do. This is what I do. Hello. ऐसा ही है. यही करता है. यही करता है. चलें. I mean, it's. I would call myself an entertainer because that's the end objective is to entertain. जो भी काम दे देता मैं कर देता हूँ. इसमें मतलब आपकी बायो में कोई एडिशन भी आ सकता है कुछ दिनों में, जिसका भी एंड प्रोडक्ट एंटरटेनमेंट हो. आपको क्या पता मैंने किया भी हो सकता है. ठीक है. So a lot of people come up to me and say क्या और बॉल वाले कोई जोक तो सुनाओ. So do people come up to you and say कि और साइन अपनी ईगो तो दिखाओ? I get the अच्छा तो हम वाइड खड़ी होगी ना, जाए कहीं भी मैं जाता हूँ तो and then after that it's a joke. They get disappointed and they see my audio. People just assume you have a Yeah. And the dog. Yeah. होता है अभी ये भी आता है. But you do identify as a singer, right? A singer, I think singer लोगों की बेइज्जती कर रहे हैं अगर I call myself a singer. I think it's what I do is rapping, so it's satirical in nature most of the time. So I just call myself a rapper because that's what I do. I don't sing. Right. So would you agree that singing is not for everybody? Actually, singing doesn't. Yeah, I think Aryan Khan. Yeah. समझ गया ज़्यादा लोग. Yeah. They're not doing it again. Well, I think इस तरह का नहीं होता कि जो भी आर्ट है हर कोई कर ले. For example, like not everybody can tell a joke. And I'll prove it to you. I've written a joke which I'd like for you to tell. Okay. And let's see if it works. After the process. Yeah, joke after. मैं पहले पढ़ लूँ ताकि चूटी ने हाथी को क्या कहा जिससे हाथी बेहोश हो गया? क्या नॉनसेंस बात है, चूटी बोल ही नहीं सकती. लेकिन तुम्हारा जोक है. नहीं, अब मैं दिखाता हूँ ना. पहली बात ये जोक बैठ के नहीं सुनाया जाता, खड़े होकर सुनाते. पानी छोड़िए. और फिर होती है ओपनिंग है. ठीक है, वो नहीं है हमारे पास. लेकिन इस तरह देखें, चूटी ने हाथी को क्या कहा कि हाथी बेहोश हो गया? मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बन रहा हूँ. कुछ रिस्पॉन्स आया, मैंने पंचलाइन चेंज कर दी. ये फर्क हो. हर कोई गा नहीं सकता, हर कोई कॉमेडी नहीं. ठीक है. So now next question. You are now a familiar face, and lots of celebrities, try and
भाई कि उनको पहचान ना लें, परेशान करते लोग. But has there ever been an instance where you've been very glad to be recognized? When I get called by the police, that always helps because कभी-कभी मेरे पास कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि मैं पकड़ा जाऊँ जो शायद illegal हो. But you know, like getting recognized. एक बार वो मैरियट के सामने एक नाका बनता है पुलिस वाले को जो मेट्रोपोल वाला जैसे है, तो उधर मैं रात के 3 बजे जा रहा था. I was with those boys Q and Root, जोश एक बैंड है उनके साथ, और फिर हम गए निकले तो उन्होंने रोक दिया. उसी वक्त पे ना पुलिस वाला देखते हैं और बोलते हैं अरे इब्राहिम एंड इब्राहिम आता है, अरे सर ये इसकी बेटी उसको जब भी घर जाता है तो बोलता है बाबा मुझे खर्ची कब मिलेगी इसका बेटा. So then they just laughed and said हाँ जाए. And so like yeah, when I get saved या कहीं को हम जाते हैं कहीं और वो जैसे हम डॉक्टर्स कहते हैं you get a free pizza or whatever. That's always good. Especially for you because he eats a lot. Sure. ठीक है. Conversely, has there been any time where you've regretted being recognized? I mean, ये होता है कि शादी में खाना खा रहे हैं और बच्ची आ गई, पिक्चर लेनी है, तो मैं कहा अच्छा मैं खाना खा लूँ फिर ठीक है. ये होता है कि खाना खा रहे हैं. So I ignored for the first 3 minutes, but then you have to stop. So थोड़ी छोटी चीजें होती हैं, which makes me sound like an asshole, but it's these little things. We are listening to someone and mall में जैसे ड्राइंग किसी कैफे में बैठे हैं, कोई बता रहा है अपने अब्बू के साथ बड़ा फटा हुआ है, कोई रो रहा है या रोने वाला है और आप उससे बात कर रहे हैं तसल्ली, और उसी और कोई आ रहा है चले. Then it's bad because अब्बू अच्छा तुम रो नहीं, पॉज करो. अभी भी कोई लोग सोच रहे होंगे पिक्चर लेने के, यहाँ पे नहीं ले सकते. And finally, कभी ऐसा हुआ है कि people are like they call him? Yeah, many times. Because एक तो I look very different than I look in the videos. So plus फिर कभी they don't know me, I'm not that big of a celebrity, so I don't. But then बेस्ट तो होता है कि एक बार मैं मॉल में था जो इस्लामाबाद वाला मॉल था, और एक बताता है कहते हैं सर क्या पिक्चर लेनी है, ठीक है. It's like gives me the camera. That's pretty embarrassing. ये वो वाली बात होगी ना जब जैसे दूर से इशारा कर रहा हो कोई यूं and you're like हाँ मैं आपके पीछे वाले को ठीक है. So you also toured with Saad Harun, yes? So what was that experience like? It was great because Saad, मैंने जब साद के साथ टूर किया था तो I was in Zabist, I was still studying. It was I think 2006, 2007. तो मेरे लिए टूर करना as a comedian बड़ी बात थी, क्योंकि ऐसा होता नहीं है. और especially when I was studying तो मैंने कभी ऐसा exposure था ही नहीं. So जैसे साद हारून मुझे बोलता है हम एक कराची वाले हमने शोज किए, then it's like लाहौर इस्लामाबाद हम जाने वाले हैं. तो वो कहते हैं कि okay we're flying out tomorrow so you better please wear a suit. मैंने कहा अच्छा man I didn't wear a suit because it was hot and I normally dress casually or whatever. तो मैंने ऐसे कपड़े पहन लिए, सूट नहीं पहना. तो मैं पहुंच गया नहीं साथ like I told you man you have to wear a suit. I was like but why? We're traveling business class.
was like, they won't let me in. रास्तों में get me stopped, but I just borrow a jacket. But uncle type, मतलब इंतहाई बर्गर और साद है, but साद is one of those comedians जिसने मुझे कॉमेडी का बिजनेस सिखाया, जिसने मुझे ये बताया कि कॉमेडी से कैसे पैसा कमा सकते हो, या क्या क्या, या 10 जगह अप्लाई करो, पिच करो प्रोजेक्ट, एक जगह तो मिलेगा. दैट डिसिप्लिन जो मुझ में नहीं था, वो सिखाया साद ने. साद इज वन ऑफ द वेरी फ्यू पीपल जो पाकिस्तान में ज़्यादातर सीनियर होते हैं जो इनसिक्योर होते हैं, वो चाहते नहीं है कि मैं इसको कुछ सिखाऊं. बट साद इज वन ऑफ द वेरी फ्यू पीपल. He's taught you, he's taught me, he's taught a lot of people. So he's continuous flow of positive energy and I agree. But yeah, performing with him is different because वो बहुत टोनी, उसका सेट होता है. साथ का टोनी मतलब इंतहाई बर्गर. इसके लाने का. काफी बर्गर के मतलब वो बबल के अंदर बबल. तो उसका मटीरियल अलग होता है, और जब मैं करता था तो आई वुड बी लाइक पहला देसी. सो it would be a good balance. जैसे हम फॉर्मल कॉलेज में गए तो मैं चल गया. अगर हम फॉर्मल कॉलेज में क्या हुआ? I heard things about this. वो फॉर्मल कॉलेज एक क्रिश्चियन कॉलेज है लाहौर में. तो हम उधर गए. It's not only for Christians, but it's called that. You can be a Muslim. But उधर हम गए और साथ में अपना अंग्रेजी में अपना स्टैंड अप शुरू कर लिया, और वहाँ पे किसी को समझ ही नहीं आया. तो बोला मुझे गाने दे. और फिर this guy kept saying कि मुझे गाने दे for 20 minutes. He's like मुझे गाने दे. So he couldn't even say anything. So he said, okay, तुम गाओ. वो आया और उसने बहुत बेसुरा गाया, चले गया. फिर दूसरा आ गया, मुझे भी. So he said, चलो ठीक है, मैं 1-2 लोगों को गवा देता हूँ ताकि क्राउड मेरे साइड पे आता है क्राउड, और फिर डिस्टर्ब नहीं करे. तो वो मिस्टेक कर ली. हर कोई वहाँ पे आते वक्त निकला. मैं भी वो एंड में साथ में ही स्टार्ट सेइंग नो, तो बोतल आती है और यहाँ से बोतल गई. फिर मैं दूसरी बोतल देखी. अच्छा वो सेट में है ना दरवाजा था एक, मैंने खुद उठा, मैं दरवाजे पे छुट्टी. because I knew कि ये रुकेगी नहीं. ये अब शीशे की बोतलें आएंगी और 1.5 लीटर आएंगी और एक कैन पे फेंकेगा कोई पानी का. So yeah, we just ran out of it. गाड़ी में बैठ गया हम आगे. So yeah, that's experience. Okay. Well, I imagine इस तरह की performances करके थोड़ा hectic हो जाता होगा. So you have something which you do to unwind after like a series of performances. Traveling is always good. Or doing. Just being with friends. It is the main. There's nothing specific that I do to unwind. So no drugs then. Okay. अच्छा material इस पे था. But drugs are happening while I'm performing. Oh. Okay. So. That's good. They're not. I don't have a problem. But when you do it, it's fun. That's fun. B shows in a different country or different city that's the lot of drugs. Right. I just see them. मैं बस देखता हूँ, दूर से सुन लेता हूँ. I don't do that. वॉशरूम तो नहीं यूज करना ना. बता दो ये तो मैं मानती हूँ. ठीक है जी. Any good luck charms before a performance? Ritual वगैरह होते हैं काफी artists के. I drew chili and I'm not. It's true. I don't know. I'm not very religious, but I am spiritual and I'm so I always
think of God before I go on stage, because any chota bada show, because I don't know, there's no special song or lucky underwear. I mean, you have to be. My rule is be sober, be focused, be in practice, and then rest you just leave up to God. That's pretty good. It's a noble sentiment. मैं इसको कहता हूँ कि lucky jeans. Okay. But इसलिए कहता हूँ कि मैं पैसे नहीं है about देने के लिए. So it has to be lucky. But I do have a shirt which every time I wore, I suck. It's probably this one. Also this one. Anyway, so ठीक है. Is it reasonable to say that Vadere Ka Beta was your first, your first popular thing? Yeah, obviously. I mean, before that, I did a show called Light On It, जिसमें हमने उर्दू improv किया था TV पे. We did 2 seasons of that. Okay. But because Vadere Ka Beta was my first अपना project. उससे पहले I was part of things here and there, doing comedy with Saad and Urdu, English. But yeah, Vadere Ka Beta was my first. Good. And take us before that. What were you up to 9 months before Vadere Ka Beta? I gave it birth. पैदाइश होने में 9 months तो उससे पहले I was living in 9 months pehले exact. I think I was living in Badr commercial alone. मैंने अपना अपार्टमेंट लिया हुआ था और वहाँ पे मैं जैसे ही पहुँचा तो ऊपर एक प्रोस्टिट्यूट रहती थी, नीचे एक मुल्ला रहता था और मेरे सामने एक पॉलिटिशियन के लोग थे जिन्होंने कब्जा किया हुआ था फ्लैट पे, वो रहते थे. हैप्पी प्लेस क्वाइट. पहले महीने मेरा बिल आ गया 1.5 लाख रुपए. मेरे पास AC भी नहीं था तो मैंने कहा ये क्या है. So I went and मैं चेक किया और मेरे मीटर पे पूरी बिल्डिंग चली थी. अब मैं किसको शिकायत करूँ? बोलने जमात इस्लामी को कोई बंदा था उससे, वो तो मुझे जिसने कब्जा किया हुआ ऊपर खर्चा हो जाता. So फिर मैं लैंडलॉर्ड के पास गया, उसने कहा मैं वापस नहीं दूंगा पैसे एडवांस. So I was without electricity for 2 months. फिर मैं गाँव गया किसी काम से, वापस आया तो मेरी पानी की टैंकी किसी ने चोरी कर ली छत से. इतनी बड़ी टैंकी ब्लू रंग की जो होती है, somebody just took it. मैं सुबह आया, मैंने कहा शायद पानी खत्म हो गया होगा, मैं ऊपर गया टैंकी नहीं थी. So काफी because when I graduated in 2010 मैं निकल गया था अपना खुद अकेला रहने. तो ये सारे उस वक्त की बातें तो experiences हैं. So yeah, I mean from there I moved around a lot. मैं एक पिछले Vadere Ka Beta से 2 साल पहले I was moving around so much. जहाँ पे मुझे जगह मिलती थी, कभी I could afford 8,000 रुपए की कोई जगह, कभी I could afford 20,000. So I would just move around depending on. That's some serious kleptomania, bro. Tanker churana, पानी की टैंकी. It's pretty inconvenient too. Like this person probably really wanted it. यार से निकाला करो ना, यही चुराओ. ठीक है. So then after this time came Vadere Ka Beta. So are you actually a Vadere Ka Beta? No, I am from a Sindhi family, but I'm not a Vadere Ka Beta. If I was, I wouldn't be there. Yeah. Pani ye wo to yeah. So tell us a little about inspiration behind the song. Inspiration, I belong from a Sindhi family, so मैंने गाँव में ये देखा, पर गाँव से ज़्यादा शहरों में ये फिनोमेना है. क्योंकि गाँव में तो वो है सरदार ना, तो उसका तो एक बंदा है हर गाँव में जो बड़ो साईं है. But जो शहरों में the way it's power को
शो किया जाता है, गाड़ियाँ और the way they push people around, and ये जो phenomenon है, जो वडेरे का बेटा phenomenon, it's more in urban Pakistan. So I grew up, मैं कराची आया नया टोरंटो से, और मैं ओलर्स पढ़ने शुरू हो गया। उधर ही मैं देखता था कि एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंस फैमिली है, उनकी बेटियां पढ़ती थी वहाँ पे। सो उनको पिक करने आते थे, तो उनका गार्ड भी आता था, और गार्ड की अपनी पजेरो थी। सो और वो लड़कियों को कोई देख भी लेता था ना, वो बंदा छुट्टी पे आके आपको कूटेगा, ये फिक्स था। तो हफ्ते में एक लड़का कुटता था, और फिर हम मकई खा के देख रहे होते थे। हाँ, वो तो उधर देख के बोला कि साईं तो साईं का कुत्ता भी साईं है। सो वो वहाँ से फिर it just grew up। और जब कराची में आप अकेले रहो ना, तो फिर आपको अंदाजा होता है कि what kind of shit happens here. I mean, क्योंकि when you're in the comfort, when you don't have to deal with daily की जो चीज़ें होती हैं, then you don't get the feel of the city. But when you're there and when you're living in these harsh conditions, then पता चलता है कि I knew this guy, 17-year-old kid, caught for double savari, spent 3 months in central jail, 17-year-old kid. And he would call me from inside. तो उनके मतलब he knew someone, so फ़ोन उसको हफ्ते में एक कॉल मिलती थी, तो मोबाइल से मुझे फ़ोन करता था, और he would tell me like the first when he got there, they would नए बच्चों को लड़वाते हैं आपस में for their own entertainment. So somebody knew him, so वो बच गया, but he would just spend nights, like weeks, crying. Obviously, it's one of the most harsh prisons in Karachi. So seeing that, and then ये गरीब के साथ हो रहा है, और फिर अमीर मर्डर करके स्विट्जरलैंड चले गया 2 महीने छुट्टी के लिए, फिर वापस आएगा, वो मर्डर took a lot out of me. सर मर्डर के बाद लोग मर जाते हैं। So that divide became more and more prominent as I lived in Karachi. And the response to this song is mostly positive. Could be negative feedback भी मिला आपको? It stands out. Yeah, these like the nationalist Sindhi parties जो हैं आपकी GSN तो Sindh Just Come and Sindh National Party, and they took offense because बात ये होती है जब गाना चला तो बहुत सारी stories थी, वो पंजाबी funded है। I told you उस दिन के YouTube पे there's this guy who's combined my interviews and he's prove करना चाह रहा है कि मैं Illuminati को मुझे पैसे दिए कि मैं पाकिस्तान को बदनाम करने आया हूँ। Illuminati सब है ना, जिसमें भी ट्रायंगल दिख गया अभी कहीं ना कहीं तस्वीर ले रहे होंगे। Yeah. Add to his video. So but again it's mostly love and it's mostly पाकिस्तान में सैटायर बहुत कम हुआ है, और जब हुआ है तो वो पुराने ज़माने में बहुत undertone subtext में होता था, इतना bluntly होता था। So क्योंकि वो टाइम ही ऐसा नहीं था, censorship थी, अब थोड़ा हमें टाइम मिला है to understand satire. So इसके लिए some people get offended, like Taroo Maroo, lot of feminists got upset because they didn't understand कि मेरी single mother है, my parents are divorced, I've lived with my mom most of my life, all of my life, and I grew up in Karachi. तो मेरी अम्मी डबरोटी लेने जब जाती थी तो उधर भी सारे साउंड इफेक्ट्स, क्योंकि हम यहाँ पे जब आए थे तो हम एक्सट्रीम में भी ट्रैवल करते थे अम्मी के साथ पब्लिक बस में, तो I saw a lot of it and I was like कि अगर मेरी अम्मी एजुकेटेड होती और कहीं एक्चुअली काम कर रही होती तो फिर तो अम्मी को पता नहीं क्या क्या फेस करना होता। एंड वाई? जस्ट बिकॉज आई डोंट नो वाई, यू नो, लाइक जैसे स्कूल में मुझे याद है लोग बोलते थे वो पॉइंट जो पार्ट आवर्स उसका पॉइंट होता था, पॉइंट चले
बच्चियाँ देखेंगे. And I would go with them because I wanted to fit in. But मैं उधर जाके मैं बोलता था क्या एक्टिविटी है, बैठ के बस देखेंगे कौन है. हाँ, पर उससे बेहतर हम चौकीदार बन जाते हैं, हमें पैसे भी मिल जाते हैं. And the song "Vadere Ka Beta" starts off with this line, "Akbar jadoi jalwani mera naam." But your name is Ali Gul Pir. Why are you trying to mislead the viewer? ठीक है, गलती हो जाती है. नाम भूल गया था. अक्सर होता है ये. I think "Vadere Ka Beta" is a great song, but मुझे लगा आपने थोड़े mistakes किए. और अगर नहीं किए होते तो आप बहुत famous होते. आपने आपको शायद नहीं अहमद अली भट्ट इंटरव्यू कर रहा हूँ मेरी बजाय. तो खैर मैंने करेक्टेड वर्जन लिखा है करेक्टेड वर्जन. एंड दिस आई वुड लाइक फॉर यू टू सिंग. मतलब वही रिदम वही 4/4 टाइम में जो भी था. और मैं आपको बीट दूंगा. मैं ऐसे काफी अकम्प्लिश प्रोफेशनल हूँ. ऐसे ही कुछ है. अली गुल पीर है मेरा नाम, करोड़ा चलाना और मीडिया मेरा काम. इतना अमीर के गुजारा हो जाए, इतना है पैसा. अभी दिखाता हूँ अपनी अकाउंट स्टेटमेंट कैसा. कैसियो वाली वॉच मेरी इस तारीख हुआ करता स्त्री हुआ करता. लड़कियां मुझे देखे और बोले वी लाइक मलाला. बाल और सेट और अंडे कभी नहीं गया हूँ जेल. मेरी जेब में है एक पियानो का पेन. बर्गरों की मुझसे हर वक्त है पड़ती, क्योंकि मेरे खिलाफ कभी FIR नहीं करती. मैं तुझे पिलाऊंगा बहुत सारी दारू जल्दी, क्योंकि मेरे घर नहीं है 3 दिन से पानी. अपने अबू का बेटा, अपने अबू का बेटा. ये रिलीज करते तो कहाँ होते. After "Vadere Ka Beta" you skyrocketed to fame. Was there any one particular moment when you thought, yeah, okay, I am famous now? Yeah, I mean driving around people would wave and मैं सिगरेट पी रहा हूँ तो मैं छुपा लेता हूँ. ऐसा में मेरी कोई कज़न है जो मैं नहीं जानता, खानदानी दूर वाले होते हैं जो. और फिर मैंने रियलाइज किया नो अच्छा वो गाना देखा है उन्होंने. Now I just smoke openly, which I don't quit. But that's interesting. Like fame has the most profound impact on your smoking habits. That's good. That's one way to quit. But yeah, it's. I still don't. I'm not used to it. Sometimes I'm driving around and I see people looking at me. I'm like, have you met before? And I'm like, no, I probably haven't. But I'm still not used to it because it's not something that I wanted. I want my work to be famous, not me. That's not important. The work should be famous. I on the other hand just want to be famous. Moving on. You have nothing to show for, so. Okay, now let's talk about your love life. Were you able to make Sharmila ki choti sister your Dalu ki Rani? I'm sorry. Sorry to inform you, मैं नहीं कर पाया वो. But I met Sharmila and she was not happy. I don't know why. But I told her, I
get away with it? I said, "Nahi, Sharmila." I didn't say Sharmila Faruqi. It's some Sharmila I know. And she's like, "Nahi, कोई सी मेरी बात थी." I had a similar, like, funny story with Sharmila Faruqi. Okay. मैं भी मिला उनसे, I had no idea who she was. मैंने पूछ लिया, आप कौन हैं? क्यों देख रही हैं मुझे? फिर उनके साथ खड़े थे अमीन गुल जी, मैंने उनसे भी पूछ लिया, आप कौन हैं? उसके बाद उस महफिल में मुझे नहीं बुलाया। Sorry to interrupt you. But yeah, I met Amin Gulji. He tried to hit on me. He didn't hit on me. Well, no, I won't. That's not a surprise. But now you've been married for almost a year. Congratulations. Not to Amin Gulji. Not you. It's fine. But I'm sorry I couldn't make it to the wedding next time, inshallah. ठीक है, तो in the song VIP you say मेरी बीवियां कम से कम 1, 2, 3. Why not 4? Are you not a Muslim? Muslim ने क्या पहला कलमा सुना है? 1, 2, 3. Hey, no, सोचा नहीं मैंने कहा कि ज़्यादा बीवियां होनी चाहिए. Maybe शायद मेरी राय में फिट हो रहा था. There is no, maybe मैं गुंजाइश छोड़ना चाह रहा हूँ कि एक maybe बूढ़ा होके करूँ. Whatever. ठीक है, चले. Not a convincing answer, लेकिन ठीक है. 75% completion पे कोई accolades नहीं मिलेगा. Anyway, some people think Ali Gul Pir is the biggest Sindhi star in Pakistan. Clearly, they've never heard of Shahid Khan Afridi, but you pretty much won the heart of every Sindhi with an internet connection. अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं पंजाब की मार्केट को टैप करूँ, and I got it down almost complete. लेकिन आप थोड़ी अगर भी हेल्प करते, तो my thing is कि चौधरी तो चौधरी का बी चौधरी. अब what of the चौधरी? I'm able to express. So what do you want from me? Chaudhry. थोड़ा टिप्स दें, ब्लैंक कैसे फिल करूँ? No, like you guys have a Vigo, we have a golden Prado. That's the stereotype. I can't boast about a golden Prado, mostly because I don't have it. Yeah. So, are you? What made this song? नहीं बनाओ. No. चौधरी का बेटा. Chaudhry ka. You can. You're Punjabi, so you can get away with it. No. Chaudhry. What are Chaudhry's famous for? Lassi. That's good though. Like Yeah. I grew up sponsored. Chaudhry. I don't know. Chaudhry की क्या अयाशी? I don't know. Chaudhry की keep. I don't know. Chaudhry की retirement. I don't know. चले आप नहीं दे पाए मुझे. Advice. I don't remember. Sorry, man. Justin Bieber fans are called believers. What are Ali Gul Pir fans called? Scientist. That should be the name of your music album. Yeah. The Scientist. And then collaborate with Coldplay. But anyway, you collaborated with Mulu on a song called Itni Chitni. Yes. ठीक है, और this caused some stir in the media and many were quick to paint you. और ये काफी लंबी description है, इसलिए मैं पढ़ के सुनाऊंगा. Many were quick to paint you as a chauvinistic pig, a male supremacist dog, a gender-biased egomaniac, a self-proclaimed, self-righteous, self-rap god, a rap god, a politically incorrect, slanderous, Byzantine, Sindhi rap emperor. A polyamorous, insatiable, demonizing hip-hop MC, a disheveled, rural, misogynistic goat whisperer, a holier-than-thou, mermaid-hating affogato, a penurious Kafka kebab apologist, a distinguished West Open sorority house arsonist,
a malicious shakakandi regurgitating vigilante, and a morally corrupt giraffe rearing Hyderabad. What do you have? These are real. What do you have to say to these people? They have a lot of time and a big dictionary. I have nothing to say. I mean, it's good for them, I guess. I suppose it is good for them. ठीक है जी. तो you have to get used to this. This is part of getting attention. I mean, I can't expect कि नहीं मेरा गाना पसंद करो या मेरा काम पसंद करो. That I can't. Some people will hate it. Some people will like it. It's logical. I don't get offended by that. Yes, I get offended. I used to get offended by people who would just be like, what do you think the comment? नीचे सब अच्छे या constructive comment दे रहे होते हैं. किसी को पसंद नहीं होता तो वो कहते हैं कि यार if you did this or if you did say this it would be best. एक होता है चूतिया. वो वाला comment ही होता है जो like dirty shagan. Full stop. Not smiling. I've seen a similar comment once. तुमने तो बहुत देखे होंगे. Any video में नहीं है, उस पर नहीं comment करता. And there is no offending some people. It was like this. मतलब कोई वीडियो में कोई scantily clad खातून थी, तो लिखा था मैंने very haram, Allahu Akbar, Astaghfirullah, but mashallah nice tricks. Kind of a serious question. You've been acquainted with the inner workings of the media for a while. So my question is, why do you think we popularize people like Tandeep Baloch and Amir Liaquat to a point that they become household names? I think एक तो segment है audience कि जो is not informed or educated enough to understand कि ये आपको बना रहा है. आगे जाकर अगर आपको वो बना रहा है, वो मंजन बेच रहा है, वो he could be, वो अपने फ्री टाइम में आपसे भी बदतर इंसान होगा, मगर वो टीवी जैसे ऑन होती है तो वो becomes एंजल जो so एक तो वो है जिनको पता नहीं है. एक लोग हैं जो I mean it's like watching a train crash, right? They want to watch it. Like these people, they probably don't follow Amir Liaquat, but they still watch the show because they want to see कि आज वो किसको जलील करेगा एक मोबाइल लिए. We want to watch it, and which is kind of messed up, but it's true. We want to watch the ridicule. अब किसको जबरदस्ती क्या खिलाएगा, क्या अब क्या लेट जाएगा, you know whatever he's gonna do, give away a baby or whatever shit, and we watch it. So I think part blame खुद भी लेना चाहिए as a society हमें सबको. When it comes to Tandeep, I think वो तो दुनिया भर में अभी it's increasing, right? Like पहले वीना मलिक या मीरा थी and it was like चुपके से उसकी वीडियो निकलेगी या कुछ, और आस्ता बढ़ने शुरू हो गया. अब it's in your face, अब and like everything it's gonna increase. Next Tandeep जो है वो पता नहीं क्या होगा. पिंग पोंग शो देखा आपने बैंकॉक? नहीं देखा. Watch you. So that is going to happen, and the thing is that this is my point of view, and a lot of people will disagree. A lot of people say, oh, she's empowering
people, you know, when she's doing this, she's like, though she can do it. It's empowering. But I don't think it's empowering. I think अगर कभी कोई skill होती, कोई गाती और वो कुछ ऐसी चीज़ करती which requires skill, which requires a craft, she would encourage a lot of people to follow. Like there's singers. If she sang, then a lot of girls would be like, yeah, we can sing too. But what is she motivating other people to do? I think as a society, that in the larger picture is messed up. But for the time being, we watch it. You know, like a train crash. It's good to watch. I know, I do. On a related note, most of your songs are about, they have a message. Yeah. VIP is about VIP culture, and Polo PC about the YouTube ban, and Taroo Maroo was about staring and uncomfortable things. So, are there any other issues or topics that you feel very passionate about, that you're going to make a song about soon, satirizing? I think extremism, but not like mullah extremism, but also liberal extremism. जैसे हम सब दाढ़ी वाले और सब उनको एक खाने में डाल देते हैं, या हम अब जब वो डी चौक पे सारे मौलवी गैदर हुए थे तो I would hear it a lot कि एक बॉम्ब गिराओ सबको मार दो. I mean अब वो moderation नहीं रही, जो बीच वाला जो होता था ना कि यार खैर है ठीक है. I mean if somebody is going apeshit, we should sit and talk to them. The solution is not कि मार दो. दोनों तरफ हुआ है ना. अगर आप भी बोल रहे हो कि मार दो, then what's the difference between you and them? So that needs to be there. अगर आपके मुल्क के लोग misguided हैं, वो आपकी गलती है. आपने educate नहीं किया, आपने उनको कुछ दिया नहीं, और एक बंदा है उसने जगह बना दी और उनको educate कर रहा है, वो भी कुछ भी educate कर रहा है. If you had been there, a good public education system होता तो वो आजकल ये नहीं मसले होता. But now we have to sit and talk to them, and we have to उनको समझाना है through whatever humor or whatever, or just dialogue. But that's what I see in our society, and I hate it. I don't like it. इतना extreme, इतना नफरत. I agree with that. We need to fight hate with love rather than hate for hate. ठीक है जी, तो थोड़ी डीप बातें होगी. Let's move on to a lighter topic. As most of you might know, Ali Gul is a very accomplished improvisational comedian. थोड़ा improv हो जाए. So for this, we'll play a little game called Actor's Nightmare. And for this, we need one female audience volunteer. कौन आना चाहेंगे? अच्छा, मुझे कैसे response करना है? Somebody, anybody is guys, will be a lot of fun. हाथ करना, खड़ा कर ले, अपना को pick करना पड़ेगा. Yes, let's pick somebody. You want to pick? So should I pick? But you have to explain it. Yeah, I will. कोई देख नहीं रहा. आपने बोतल जो ली है. आने. Not every day you get to share the stage with such a big star and Ali Gul Pir. So, Ajay, what's your name? Sumbul. तो होगा इसमें क्या? सुंबुल, you have this script, ठीक है? इसमें आपकी लाइनें लिखी हुई हैं, but अली गुल की लाइनें नहीं लिखी. तो you will like बोलेंगी ये. अली गुल, who has no idea what this is going to improvise replies to you. ठीक है जी? Make sense? Yeah. So what we need from you guys is a suggestion for any physical space or location. That's tough. First one. Swimming pool. Let's go to swimming pool. So this is the script from the Twilight scene where Edward is telling Bella about the physical space is a swimming pool. Swimming pool. Yeah. Can you guys एक sound check कर ले? आपकी आवाज आ रही है? अपने घर में नहीं है. I don't know. And scene. हाँ, जिसमें बेला लिखा है वो आप बोलो. Inside the swimming pool or around it? कुछ भी
भी हो सकता है, आप बोल लेते हैं स्विमिंग पूल के अंदर। ठीक है, सब कुछ सुनो, ओके, लेट्स स्टार्ट। Bella! I need 4 laps. Go. You have something to say? No? बोलेगा, बोले. Possibly fast and stronger. Skin is pale white and eyes cold. Your eyes change color and sometimes you speak like you're from a different time. You never eat or drink anything. मैं तो तुम्हें इसमें सिखाने आया था, तुम इंटरव्यू ले रही हो मेरी। अच्छा, मैं अलग इसके लिए हूँ क्योंकि मैं अबू मेमन है। अम्मी जमैका की रानी थी, तो इसके लिए मैं डिफरेंट हूँ। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करो, हम स्विमिंग तुम्हें सिखाते हैं। How long you have been 17, since I was 15. मैं 17 now, always young. Swimming किया ना तो body fit है। एक पैक है, वो भी नहीं है। Vampire? No, I'm not vampire. I am swimming instructor, Mr. Steven. Edward? Turns to face Edward. No. Turns to face Edward, no. Edward, no! It is guard time. 6 p.m. No, I will help you. I will help you. What hurt me? I will not hurt you. What are you doing? We will go into pool. I will first put your mundi in water. Water body. Then we start class. Okay? Huh? It's like that. You're beautiful. I am beautiful. Yes. What is like that? Yes. My chest. One bag done. Follow that. I don't believe that. You don't believe it? I can teach swimming. I've taught Edward को मैंने सिखाया और ये राजू कुलड़ी one my student still in water. Been in water for 1 month. I don't care too. पानी में अच्छा कलर आ रहा है। It doesn't matter. It doesn't matter. Let's just get into water. Cold. You out? Huh? I trust you. You trust me? Okay. Then jump. I'm here. I trust you. You are here, you trust me. Okay. So we have to get into water. Have to actually swim. I will go inside. Trust me. Okay, Thank you so much. Thank you. Enjoy that, Ali. Yes, I am. I've never played this game, but because it's pretty good. Yeah. Do you miss improv? I miss improv. That's why जब भी तुम लोग करते हो तो मैं कहता हूँ कि हाँ, वो सुना है लॉल वाले बड़ा अमेजिंग इंप्रूव है। वैसे लेते तो नहीं है वो किसी को, लेकिन अगर आप मुझे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्स्ट्रा बनने दें तो बात कर सकते हैं। ठीक है जी, तो what time is it? We are okay. Let's move on to our final segment. ठीक है जी, अभी तक मजा आया आप लोगों को? आई बैठ थोड़ा ज्यादा मजा आता है, अच्छी बात है। ठीक है, दोस्त हैं इसके लिए वो होते हैं 4 लोग अपने बुलाते हैं।
तालियां बजाए ठीक है। तो इसमें ये क्या होगा, जैसे वो नहीं था कॉफी विद करण, उसमें होता था रैपिड फायर राउंड, हाँ तो वो नहीं है मेरे पास। पार्शली बिकॉज मुझे अक्सर खवातीन कहती हैं रैपिड फायर, लेकिन मेरे पास जो है ना वो है फायर रैपिड राउंड। फायर रैपिड राउंड ये अभी तक मार्केट में आया नहीं है। फायर रैपिड राउंड, उसमें क्या होगा, और बहुत मतलब नॉवल इनोवेटिव है, छोटे छोटे सवाल हैं उनका आपने फायर रैपिड राउंड जवाब देना, मतलब सेम फायर रैपिड आपने जवाब दे दिया, ठीक है, जैसे ही सवाल वैसे जवाब, हाँ डिले नहीं। रैपिड, इसको रैपिड फायर ही कहते हैं। यार आप समझ नहीं रहे ना, ये अलग है। ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी में नहीं आता कि ये आइडिया ओरिजिनल है, ये देखिए यूरोप में हुआ, ये नहीं हुआ ना यूरोप में, ये यहाँ पे पहली दफा हो रहा है। फायर रैपिड राउंड बोले, फायर रैपिड। ठीक है, तो इसमें मैं थोड़ा म्यूजिक लगाऊंगा ताकि माहौल बने अर्जेंसी वाला। थोड़ा सा टाइम दे मुझे। अरे ये क्या लग गया, ये आप लोग सुना होगा पहले अक्सर साउंड ट्रैक, जितने सबसे स्टीरियोटाइपिकल मैंने साउंड ट्रैक चूज किया, ठीक है। आर यू रेडी? या स्टार्ट चाहते हैं कैसे? क्यों ठीक है, एंड स्टार्ट। ओके Who's your favorite Pokemon and why? यार सोचना नहीं है यार। Pikachu, that's the only one I know. ठीक है। If you were Malala, what would your first line of the Nobel acceptance speech be? Malala बिरयानी खाते हैं? अच्छा ठीक है। Which celebrity other than me have you always wanted to meet? Al Pacino. How I'm looking? If I held a gun to your head and asked you to choose between making out with Fawad Khan or Mathira, why would you choose Amir Yagar? Why would I choose Amir Yagar? Oh, because I want to kill myself. Sharmila, Kashmala or both? Both? The most awkward moment in my life was when my parents very casually introduced me to the doctor who circumcised me. What about you? Most embarrassing. मेरे खाना खत्म हो रहा है। Yeah, doctor appointment. Where he ठीक है। If you were a girl, what kind of girl would you be? ढोल बजाने वाली या चमचा मारने वाली? ढोल बजाने वाली. What's your favorite WhatsApp emoji one? That's my the glasses, the shades. Oh, cool वाला. या nerd वाला. Cool वाला. Is Ali Gul Pir more lawnmower or more profitable? Next question. Weirdest fill in the blank you've gotten for signing a blank be signed. I am not paying attention. This is a stupid question. Favorite Game of Thrones character? Sorry, मैंने देखा नहीं है. ये वो है. If a woman has an Adam's apple, is that a deal breaker for you? Should Messi be put in jail for tax evasion? Double standards. Did you put up those posters urging Rahil Sharif to stay? No. Lies. एक दर्जन अंडे की कीमत? 24. गलत. Tanveer Baloch's real name is Fauzia's name. If you change your name, what would it be? Mustafa Hussain Taran. Very inconspicuous. Weirdest rumor about you? Weirdest rumor,
Somebody, never mind. Okay, next question. Weirdest rumor about you. Illuminati. Your most annoying habit. Annoying habit? Having friends like you. Coming to this thing. Just being nice. Jahesh में कितने deep freezer मांगे? एक भी नहीं. बहुत देते हैं. You missed out. You once told me you bungee jumped off a train in Thailand. What is more scary, that or when the wife says she can? Bungee jumping. Kill, marry or sleep with? Yes. Dentonic का mascot, नाच पान मसाले वाली आंटी या डिंग डोंग बिल्ली? I would sleep with Dentonic वाला. That's a guy. How do you know it's a guy? Auntie, right? Yeah. Because I don't want to cheat on my wife and sleep with the naas pan masale wali auntie ko buddhi bhi hogi. See, that's the reason. That's the primary reason. Yeah. Good yogi. Okay. Plus it's a cartoon, so like I don't think it's bad fucking up. That's pretty good. That's pretty good. ठीक है, ये round of applause, Ali Gul Pir, Thank you all so much for coming out and watching this. This is the first time we did something like this. तो आपको जो भी feedback वगैरह देना हो जरूर दीजिएगा. And if you have anything No, to say. thank you guys. Akbar, I started this thing and I was skeptical that it will be good, but it was not. Some questions were very stupid.